Hi everyone. Today we have Bhagesh Patel from Kodiar CAD Center who is joining us for our next Talks 4.0. Hi Bhagesh, welcome to the talk. Hello, hello everyone. So Bhagesh, how are you doing? How are you, man? All good. Thanks to the COVID. Because of the COVID, our industry is growing rapidly. After the ratio is before COVID and after COVID, the ratio is slightly more increasing than what we think about 2020. Oh, I see. So you Yeah. have primarily been within the CAD CAM industry, right? Yes, right. So for all the viewers, if you could give your background, what you have been doing, what you're doing right now, that would be very interesting. Yeah. So started first with the CAD, 2D diagrams and all, and then lightly shifted to 3D models, 3D modeling, and 3D renders and all. But still, something is missing to convince the client to showcase your real life scenarios and to combining two realities. So just came up with the AR first. As a first, I'm only know about AR, and then knowing about VR, how VR works, and then MR comes into life. So many realities are there. That started working in on AR and VR and MR, and right now mainly focus into these industries only. So they are the future. So they can change anything. If you want to teach someone, if you want to tell someone, if you want to suggest someone anything, you can use this technology to in any industry. You can create a change with using this technology. Any industry. Got it. Yeah. So, for anyone who wants to get into CAD and CAM, what is the best way to start getting into it? For a best way to start is to get something in their field. If someone wants to start a CAD, don't think startly about you can learn everything from the software. Software is just a part of that, but you need to thought about what how to create. Suppose if you want to create a house, you need to know some basic fundamentals of that. So after that, software is just a tool for you. um, Everyone is writing with using a pen, okay, but writers कुछ और लिखते हैं, हम कुछ और लिखते हैं, okay. True. Everyone is using same ink, but you have to be that type of thought process, then this is everything for you. You can create anything. I see. So, you are saying that not just the CAD CAM skills are required, but then the mindset, understanding of the 3D, a Yes, lot yes, yes, yes. more Thought needs to be. process for me, thought process is more important rather than more focusing on software and anything. Mhm, mhm, mhm. And then you can create a very good thing. Yes, there are two types of person. One is operator and one is creator. So if you want to be an operator, you can no need of any knowledge. But if you want to be a creator, that you needs that fundamentals, that thought process, then you can create anything with using this tool. Got it. Got it. Um, so now coming to something that you had touched, you said that due to Corona, due to COVID, a lot of industry shifts have happened. Any Yeah. industry shifts that you have seen within your domain for the CAD and CAM? For a CAD and CAM, generally in Gujarat, many of GIDC on industrial zones are only focusing on the 2D modeling and 2D data. Okay, but still they require 3D data to complete their task in a less time and in very efficient way with that analysis. But after the COVID, they have to be started virtually. They have to be work from home, something that is not possible. But so the change is shifting now. So they have started using software for that all process, for designing, for development, everything. So that is a change for me, because we are here conveying them from past few years, but still they are not agreed to do something new for their better purpose. But now they are started shifting. They are calling us. We want to work on this software so that we can work virtually and we can work efficiently. Not virtually. I think virtually is a plus point, but efficiently is a more important. The software will give you each and everything without losing your any material.
So that is good for them. got it, got it. Yeah. So now from CAD and CAM, uh, Yeah. आप अब CAD and CAM से मूव हो रहे हो AR VR MR इंडस्ट्री के वर्क. So Yes. what got you excited about it? कि क्यों आप शिफ्ट हो रहे हो from CAD CAM? You're doing CAD CAM, yes, you'll continue doing that, but आप AR Yeah. VR MR में क्यों मूव हो रहे हो? For us, we started CAD Camp uh, in early days in Gujarat. So right now, we also want to be in pace with the current changing scenarios. This is the first step. And second step, which I like most, is to conveying your design. If I created something, if I want to tell someone what is my thought process, what I created, what is my totally thoughts on this product, so I can convey my all things with using AR VR and MR, and that is good for each and everyone. Because of only 40 to 50% those are technical people, they can understand this, but 60% people, for say 55% people, they are not very well aware of these kind of things. So I can bring more people to CAD camp, Mhm. first thing, and creating a awareness to each and everything that required for their technical curriculum, technical procedure, and technicalities. So each and every stage they will have this. So AR and VR with using combining CAD CAM, I think this is a life changing solution for everyone. And Everyone should use this kind of technology so that they can simplify their process, very true. simplify training their people, creating something new, selling their product, each and every stage of their uh, company, their procedure, their everything. So they will require this kind of things. Very true. So what is the kind of work that you have done in this new technology so far? Started First started with the creating a virtual reality demos for multiple companies, and then creating a virtual simulator for some for companies so that they can sell their products into each any around the corner. Okay, we have a clients like Milacron, KHS, okay, Bakeri Group. So we have a many client portfolio in this also. So but right now we are more focusing into education field, Okay. because after the COVID, uh, many restriction in education field, but as a part of our company, education is our core part, so we are not letting that change. We want to create something for a student, for a next generation, so that they can know about our past generation things, and they can get the experience of our, so that gap of a experience gap will fill in very soon, because we have a very good manpower. India is a country where many of our from a young generation, they are eligible to create something new, but they have a less experience. So I think AR, VR, and AMR will fill this gap if we create something for them. So they will start learning in very much efficient way, and they can create something new for India, for a better India, for a new India, to create a more Make in India products. Got it, makes sense. ये Yeah. जब आप AR VR MR लेके जाते हो कस्टमर्स को टू पिच एन आइडिया टू प्रपोज अ सॉल्यूशन, आपको क्या फर्स्ट फीडबैक क्या आता है? हैज दैट फीडबैक चेंज कि पहले डिफरेंट फीडबैक आता था आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, अभी कुछ फर्क आ रहा है? तो कैसा रहा है आपका ये जर्नी? बिफोर, जैसे हमने स्टार्ट किया था 4 साल पहले से, जब स्टार्ट किया था तब दे आर ओनली फील अमेज कि यस ये कुछ नई चीज है, हम ये ट्राई कर सकते हैं, बट ड्यू टू हार्डवेयर कंस्ट्रेन दे नीड समथिंग सेटअप, उनको सेटअप अलग से चाहिए था। फिर सेटअप के बाद दे नीड, उनको कोई पर्सन चाहिए कि दैट वो उसको संभाल सके एवरीडे, किसी को चेक चेक करना, वो सेटअप करना, वो सब कुछ था। एंड देन टू अंडरस्टैंड वो जो डेटा वो लोग जो यूज कर रहे थे कैड में, उसको कन्वर्ट करना था टू इनटू एआर वीआर। सो दैट इज आल्सो कन्विंसिंग पॉइंट, क्योंकि डेटा एक कंपनी का था, सो वी आर यूजिंग दैट डेटा, एंड दैट प्रोडक्ट इज नॉट येट इन मार्केट। वो कुछ हफ्ते बाद, महीने बाद मार्केट में आने वाला होता है। तो फिर वो सब कुछ भी वी हैव टू कन्विंस देम कि वो कैसे डेटा एश्योरेंस मिल सकता है, एंड देन दे विल गेट अ प्रॉपर आउटपुट कि
कैसे VR एंड NMR कर सकते हैं इन अर्ली डेज। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर क्या हुआ इन बिटवीन लास्ट before COVID time, so they are okay to use VR, but not as in full fledged. They just want a VR as an additional element of their company, but right now they want their part of their company. This is change. Mhm. फर्स्ट उनको चाहिए था कि सिर्फ दैट इज कुछ अलग सा लगे, कुछ दे आर क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स देम देयर पार्टनर्स देयर एसोसिएट्स, बट राइट नाउ दे वांट टू एज अ पार्ट ऑफ देयर कंपनी। सो ये एक अलग शिफ्ट हुआ। So this, I think, is a major shift, going from यस, nice to have to kind of a must to have, right? मस्ट टू हैव फीचर या। And has that resulted in increase in business? यस, Okay. And which use? Is it AR? Is it VR? Is it MR? Which is most in demand currently, according to you? AR is I think more demanding Uh-huh. because of less contact. First thing, they required a less hardware for this. They can use their phone now. Everyone has a good phone with a sensor that can create a AR, use AR content. So ये एक first option था. And then the companies, they want more immersiveness, they want more details, they want more interactivity. So they are started using VR. MR is right now is increasing. Mixed reality is increasing. By the time of we will get a very good devices in India, so MR will be a good platform for that. So blending the two mixers, so they don't need a VR device and they don't need their phone to use that thing. Because अगर आप अभी AR use करते हो तो there is some limitation. अगर कोई भी एक बंदा phone I think hold करके I think 5 minutes 10 minutes maximum they can hold. Okay, but after that you will they are decreasing their time. They don't want to focus on AR, but how MR at that time उनको help करेगा कि अगर आपको एक्सपीरियंस मोर करना हो, डिटेल में आपको कुछ चेंजेस कराना, तो वो सब कुछ आप यू कैन यूज हाफ एन आवर 1 आवर 2 आवर एंड एज द सेम लाइक जैसे मैंने क्लासेस पहने सेम लाइक वैसे वो पहन सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर देम। तो भाग्येश, ये AR VR MR डिवाइसेस बहुत सारे चेंज होते गए हैं। सो आपका क्या व्यू है, वेयर AR VR MR डिवाइसेस वेयर अभी कहाँ पे है और आगे जाके कैसे हो जाएंगे? पहले से मैं बात करूं इन अर्ली इयर्स ऑफ VR, तो VR एंड AR MR में डिवाइसेस वेरी बल्की थे, सेंसर्स बहुत कम थे, वी हैव अ रिस्ट्रिक्शंस मोर। बट अभी जो डेवलपमेंट जो VR इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, XR इंडस्ट्रीज के अंदर एज इन कॉमन टर्म, सो बहुत immersively experience is the first option. Second, they are focusing more on sensors so that user can attach many things, they can do more things, they can explore more details. उसके बाद फ्यूचर की बात करें तो ये दे आर चेंजिंग अवर फोन। अभी हम लोग जो फोन यूज कर रहे हैं, वी कैन शिफ्ट अवर फोन टू MR डिवाइसेस क्लासेस। सबके पास वी नाउ हम लोग कंफर्टेबल है टू यूज वायरलेस हेडफोन। ओके, तो only wireless headphone and then MR device is only for you. No need to use phone. A phone use मत भी कहीं पर भी चलेगा। Okay, but you can interact everything that in 3D. So आप phone में use कर रहे थे that is 2D. Okay, many companies try to create a holographic phones and all, but true, MR is a proven solution. There has to be something in phone industry, but MR is has to be something a proven solution for everyone, for everyday life scenario. तो हम ये चेंज कर सकते हैं एंड फ्यूचर में ये पॉसिबल हो ही जाएगा इन नेक्स्ट 3 to 5 जैसे वो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। सो नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये चेंज हो ही जाएगा आई थिंक। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट 3 से 4 सालों में इट विल बिकम लाइक MR ग्लासेस हर कोई पहन पहन के घूमेगा? यस, नाइस। आपके दो इंडस्ट्रीज, नाउ यू हैव टू इंडस्ट्रीज, वन इज द CAD CAM एंड सेकंड इज द XR. हाउ डू यू यस। सी both of them merging? Merging for me is a very good thing. Okay, but for industry is I think a required portion. Depends on their workflow.
depends what they want to do, what they want to see, what they want to create. सबसे पहला चीज है कि CAD CAM, and I think in so many years we have only thing that is called 3D printing. Okay, CAD CAD में काम कर रहे थे, CAM में काम कर रहे थे, फिर पहले डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हमारे पास और कोई चीज नहीं थी to interact with that your model. Okay, so with using VR, AR and MR, XR in technology, with using XR हम वो चीज जो हम क्रिएट करते हैं CAD CAM के अंदर, जो एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चर को, जो क्रिएट करते हैं मशीन के पार्ट्स को, वो सारे चीज आप VR पे एक्सपीरियंस कर सकते हो. अगर वही चीज आपको किसी को इंटरेक्ट करवानी हो इन रियल लाइफ सिनेरियो, यू कैन यूज AR और MR डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर. सो वो ये आप काम कर सकते हो विथ यूजिंग दिस. सो ये कॉम्बिनेशन करने के बाद इज आई थिंक, जैसे कि इंडस्ट्री के पास CAD CAM एंड CAE ही था, आई थिंक अब लोगों को बोलते हैं कि CAD CAM CAE एंड XR ये तीनों को मर्ज करना चाहिए. जैसे लोगों ने CAD के बाद CAM को मर्ज किया, फिर CAE को मर्ज किया, नाउ आई थिंक एवरीवन हैज टू मर्ज XR फॉर their process. Makes sense. Makes a lot of sense. We were speaking to some of these automobile companies who were doing CAD CAM, and then they started doing 3D printing instead of doing the clay models because of saving time, cost, and everything. Now they are moving from, as you said, from 3D printing to visualizing it using AR or VR. Yes. Have you had similar experiences? What do you think? Designing instead of designing on a 2D screen, does it make sense designing in the 3D hologram space? Yes, my first focus वही रहा है कि जो the people they have experience, they can create anywhere, they can create in 2D, but they can create better in 3D environment. And second thing, जो early starters है, जिन लोगों के पास आइडियाज है, थॉट्स है, बट ड्यू टू दे हैव टू लर्न सॉफ्टवेयर, दे हैव टू लर्न समथिंग, एंड देन उसके बाद वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं. बट इन 3D स्पेस वो लोग वही इमेजिनेशन को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली टू क्रिएट समथिंग न्यू. सो ये जो उनका जो गैप जो है क्रिएटिंग समथिंग न्यू, तो वो कम हो जाता है बाय द टाइम यूजिंग ऑफ 3D स्पेस. बिकॉज 2D में उन लोगों को बहुत चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, बस इन 3D वर्चुअल they can create start and they will get a real time update कि अगर मैं ये चीज ऐसे क्रिएट करूंगा तो ये ऐसे क्लासेस पॉसिबल है. सेम लाइक जैसे क्रिएटिंग ऑफ डोर का एंगल जो रहता है वो कितना रख सकता है वो सब कुछ, तो वो क्रिएट करने के लिए दे नीड अ सर्टेन एक्सपीरियंस. बट अगर वो क्रिएट करेंगे 3D में, सो दे विल गेट अ रियल टाइम व्यू कि ये ऐसे पॉसिबल रहता है कि फर्स्ट दे आर स्केचिंग, देन क्रिएटिंग अ फाइनल स्केच एंड देन क्रिएटिंग अ क्ले मॉडल. तो ये प्रोसेस उनकी कम हो जाती है. सो एज एन अर्ली स्टार्टर्स इज very easy for them to use MR for them. And as a many startups are increasing in early era की startup is only more focused in creating a something new product, but जिन लोगों के पास experience था वो कर सकते हैं. But right now a student of a first year that can start creating something new with using this extra technology, and that is good for us. That is good for creating empowerment and empowering our country. That is good for us. Got it. So ये boost भी करेगा हमारे इकोसिस्टम को. Very true, very true. So Codear is primarily based in Gujarat, but you operate India-wide, right? Yes. Okay. So within Gujarat, where do you see opportunities for XR? I think opportunities are everywhere, not constraining Gujarat. But in Gujarat, first thing, as for me, is we have a very more industrial area. First thing, and second, we have a lot of tourist attraction. Okay, so in tourism industry and in technical industry, we can merge both the things. Okay, if someone is gone there for a beach or someone is gone there for a temple, okay, we many religious sites in Gujarat, so if they want to experience what in early times, so they can experience by using XR, merging that with using MR device, merging that old model into real model, so they will get the experience how in early days that was. In coming into technical side, I think we have a more proven offsets. We already created a something in Gujarat, so many of companies have started creating like expresses for VR and AR for their purpose, for a training, for a sailing.
ओके, सो गुजरात में हम बिजनेस की बात करें, एक्सआर के बिजनेस की, सो मेन चीज वही रहती है इसमें कि एक्सेप्टिंग हार्डवेयर, हार्डवेयर एक लिमिटेशन थी, बट वो अभी चेंज हो रही है धीरे धीरे। जो हार्डवेयर में चेंजेस जो शिफ्ट हो रहा है बाय द टाइम ऑफ गिविंग अ मोर good hardware with a less price tag, because that is more important. Everyone can afford, that is more important. अगर टेक्नोलॉजी हम जो क्रिएट कर रहे हैं सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वी कैन रीच मोर पीपल। इफ वी कैन रीच मोर पीपल, आई थिंक द, जैसे कि मैंने बोला कि अभी वो फोन को रिप्लेस करना है, तो फोन को रिप्लेस करने के लिए वी हैव टू बी दैट काइंड ऑफ प्रोसीजर की उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, उसका वर्किंग भी उतना होता है जितना भी आज का फोन हो रहा है। अगर वो सेट हो गया, सो वी हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस इन गुजरात एंड पैन इंडिया आल्सो। गॉट इट, गॉट इट। सो भाग्येश जी, AR VR MR का बहुत सारा यूज केसेस है बिटवीन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। स्पेसिफिकली गुजरात में जैसे आपने बोला बहुत सारे एंड एप्लीकेशंस है, यूज केसेस है। आपको कहाँ पे लगता है वहां पे यूज केसेस है और आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? સૌથી પહેલી વસ્તુ કહું તો ટ્રેનિંગ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે કે આપણે આગળની જે જનરેશન જે આવશે એ લોકોને ટ્રેન કરવા માટે સૌથી પહેલી વસ્તુ મારા માટે ફોકસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે નવા સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે, જે નવા લોકો ટ્રેન થવા માંગે છે એ લોકો માટે XR સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। સો એ લોકો જલ્દીથી શીખી શકે છે, જલ્દીથી કામકાજ કરી શકે છે। જે ઇન્ડસ્ટ્રી ગેપ જે છે એ ફિલ આપણે પ્રોપરલી કરી શકીએ છીએ। એ ગેપ ફિલ થવાથી નવી જોબ્સ, નવી વસ્તુ ક્રિએટ થશે કે જે હેલ્પ કરશે ગુજરાતને ગ્રો કરવા માટે। ઓકે, પછી વસ્તુ છે કે ગુજરાત પાસે વધારે પડતા મોટા ટ્રાવેલિંગ એક્સપિરિયન્સ, ટ્રાવેલિંગ પ્લેસીસ છે, તો એ દરેક જગ્યાએ આપણે MR એક્સપિરિયન્સીસ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ। સો જે લોકો વિઝિટ કરે છે ગુજરાતને, એ ગુજરાતને વધારે ઇમર્સિવ ફીલમાં વિઝિટ કરે, એ લોકોને યાદ રહે અને ઘરે જઈને પણ લોકો ચેક કરી શકે છે। એમને ગુજરાતને એમના ત્યાં કોઈ પણ સિટી, કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં પણ રિલીવ કરવું હોય તો ત્યાંથી પણ લોકો કરી શકે છે। અને પછી છે કે એન્ટરટેનમેન્ટ, બીકોઝ કામ કર્યા પછી તો એન્ટરટેનમેન્ટ જ છે। ઓકે, સો એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર વિથ ગેમિંગ, ક્રિએટિંગ ગેમિંગ અરેનાસ ફોર VR, ક્રિએટિંગ મલ્ટિપલ એન્ટરટેનમેન્ટ એક્સપિરિયન્સીસ કે જે અત્યારે જે લોકો એક્સપિરિયન્સ એન્ટરટેનમેન્ટ કરે છે એના કરતા કંઈક વધારે અલગ, પર્સનલાઇઝ એક્સપિરિયન્સ એન્ટરટેનમેન્ટ, આ ત્રણ વસ્તુ અમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે ગુજરાતને XR સાથે કનેક્ટ જલ્દીથી કરશે। Thank you. Do you think the future is bright for technology in India? Yes, very much. I think we have very complexity in our workflow. So कोई भी चीज को कॉम्प्लेक्सिटी में से निकालना हो इन बेटर वे में, सो टेक्नोलॉजी ही सालों से प्रूवन सॉल्यूशन रहा है कि उनको चेंज करे। एंड इन इंडिया वी हैव many problems, so we can solve using this kind of technologies. I think AI, merging artificial intelligence and XR is very good thought कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे हम चेंज कर सकते हैं और वो कंप्लीटली हम उसको प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम है ही नहीं विद यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। If you had to give one example for, let's say, solving complex challenges using XR, which one would you give? बेटर सिटी प्लानिंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, बिकॉज हर कोई लोग बोल रहा है कि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज्यादा है, प्लानिंग बहुत कम है। तो वो हर एक चीज आप इन अर्ली ईयर्स, जैसे कि मैंने केस स्टडी पढ़ा था बहुत टाइम पहले कि जैसे कि माउंट फूजी है, जब माउंट फूजी का जितना भी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, जितना भी एरिया जो है उसके जितनी भी बिल्डिंग्स की हाइट उन लोगों ने प्री डिफाइन कर ली थी। सो उन लोगों ने वो पूरा टोटल ओवरऑल एरिया स्कैन किया था। स्कैन करने के बाद फिर एक हाइट डिसाइड की थी ताकि माउंट फूजी के रेडियस के जितने भी किलोमीटर्स के एरिया में जितना भी लोग ट्रैवल कर रहे हो, डिस्टेंस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो दे कैन इजीली सी माउंट फूजी। सो फर्स्ट थिंग, ये एक एग्जाम्पल था कि दे यूज अ वर्चुअल वॉल टू गेट दैट काइंड ऑफ आइडिया, दैट काइंड ऑफ प्लानिंग। सो ये सब कुछ चीज हम प्लानिंग डे 1 से प्रॉपरली कर सकते हैं ताकि जो ट्रैफिक का इशू जो है we can solve it easily, because we have a very much population and everyone wants their own vehicle। okay, so ये सब कुछ भी हम simplified workflow में कर सकते हैं, possibilities है। so जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं हम for our smart cities project, so वो हम लोग पहले से प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर मेंटेनेंस,
नॉट ओनली प्लानिंग, उसको मेंटेन करने के लिए भी वी हैव टू गाइड थ्रू पीपल की यहाँ पे ये कनेक्शन है, यहाँ पे ये चीज है, तो ये सारी चीज एक ही जगह पे आप यूज कर सकते हो विद यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। राइट नाउ अगर हमको कुछ भी एक सिंगल केबल भी चेंज करना हो, ओके, फाइबर ऑप्टिक्स केबल एनीथिंग, सो वी हैव टू, हमको बहुत लंबा स्पान कट करना पड़ता है। बट अगर हमारे पास प्रॉपर स्पॉट जीपीएस लोकेशन के थ्रू है, with using GIS technology and CAD/CAM and combining in importing into XR, so ये सब कुछ चीज बहुत कम हो सकती है, and this is a main use of XR। जैसे हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं इंडिया की ग्रोथ को। Very true, very true. So so for a student who wants to get into AR, VR, MR, or for that matter CAD or CAM, what would be your top 2-3 advices? First has to be is, I think a common for me is a slight thought process. They have something in mind, so I can shape that in very well manner. But वो उनके पास नहीं है, no issue. The first thing is patience, because CAD CAM और XR में काम करना है तो पेशेंस इज वेरी मोर रिक्वायर्ड, कि आप जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं वो आज पॉसिबल नहीं रहता है, बट आफ्टर अ फ्यू डेज अगर आपकी प्रोसेस प्रॉपर रहेगी तो वो रियलिटी बनेगा। बट फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्डर, और वो फेज जो है वो बहुत कम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि क्रिएट करने के बाद दे आर नॉट गिविंग देम सो मच टाइम, दे आर नॉट क्रिएट थिंकिंग अबाउट कि क्या चीजेस पॉसिबल है ताकि मोर पीपल कैन कनेक्ट टू देयर प्रोडक्ट। अगर वो चीज आ गई तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकती है, बट मैनी ऑफ प्रोडक्ट्स आर फेलियरिंग ड्यू टू कि वो लोग सोच रहे हैं कि क्रिएट करने के बाद दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम कि उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सो एट दैट पेशेंस इज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। अगर पेशेंस से वो लोग काम करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है। एंड देन थर्ड एंड लास्ट इज टू प्रैक्टिस मोर, think more, work more, and then create more, because फर्स्ट प्रोडक्ट इज ऐसा नहीं है कि वो आप मार्केट में स्टार्टअप कर लोगे, ओके, बट यू हैव टू थिंक मोर। अगर आपने कुछ फर्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट होगा फॉर एरोस्पेस, अगर आपका प्रोडक्ट जो सक्सेस हुआ है वो आपका 10th और 12th प्रोडक्ट रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का रहेगा, सो दैट इज ओके। You are created something that is okay, not more focus on selective genre, selective side of that working। create करो, कुछ भी possibilities है। and XR इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी इंडस्ट्री के लिए, कोई भी चीज के लिए आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सो कैड कैम एंड XR, कोई भी चीज बन रही हो, जैसे कि इवन video conferencing devices, video conference services that can has to be using a software layout, okay, उसका layout बनाने के लिए to require software, each and every UI that require creating a software। so ये सब कुछ चीज करने के लिए simple UI के लिए भी required a software। so software का importance है, but with using that importance you need these three parameters: first knowledge, second जैसा कि मैंने बोला patience, and then third trying something new in each and every field, not restrict to any particularly field। so वो आपके लिए सक्सेस हो ही जाएगा। Very interesting, very insightful as well.